अभी कल ही होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए और उसमें भारत में पिछले वर्ष 2022 में 1,70,00,000 सुसाइड हुए, जिसमें से 50 से 60,000 किसान भाइयों के या हमारे मजदूर भाइयों के थे। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसे क्यों मजबूर हो रहे हैं? आउटस्टैंडिंग लोन्स, इन सब बातों की वजह से। और हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पर 74,हजार रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन है। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। हमारा तीसरा तत्व है हमारे युवा। हम यंग युवा, हमारे यहाँ यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड लग रहा है कहीं हमें डेमोग्राफिक डिसास्टर ना बन जाए। उनके लिए हम रोजगार के उतने अवसर पूरे नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, 8% हो गई है और हमारे युवाओं को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और साथ साथ इसके हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब मैं चौथे तत्व पर आऊंगा, मजदूर वर्ग। देश की अर्थव्यवस्था का मूल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मजदूर भाई ही करते हैं। 2019 में मनरेगा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें बताया गया कि 71% मजदूरों को कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 54% मजदूर भाइयों को पेड लीव नहीं मिलती और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% और शहरों में 80% मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। और हमारा पांचवा तत्व आएगा एमएसएमई या हमारे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। भारत सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, लेकिन हमारे कितने उद्योग बंद हुए? 19,000 से ऊपर एमएसएमई 2021 और से मार्च 2023 के बीच में बंद हुए हैं, जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इन सब चीजों को मैं चाहूंगा मंत्री महोदय ध्यान दें। और कुछ मैं सजेशन देना चाहूंगा कि हमारा देश एक महान देश है, हम में क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन सके। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। कृषि को सोशल सर्विस ना बनाएं, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे उसको हम आत्मनिर्भरता भी किसानों में पैदा करें। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आएगा किसान भाइयों को के लिए एमएसपी गारंटी के लिए सरकार कानून बनाए और उनको प्रॉफिटेबल बनाए और उनको सस्टेनेबल बनाए। दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। एक जमाने में हम सुपर पावर कहते थे, हमने तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को दिए, जबकि दुनिया में विश्वविद्यालय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा सिर्फ एजुकेशन पर खर्चा 2.8% है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 5% किया जाए जीडीपी का। बाकी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, उसमें यदि मैं चाहूंगा सरकार जो कैसे उसको डिवाइड कर सकती है अमीरों और गरीबों में, सो दैट जो सभी वर्ग को पूरा, जो देश की तरक्की का पूरा हिस्सा मिल सके। और अगली बात मैं चाहूंगा अपने दुकानदार भाइयों के लिए कि सरकार उनके लिए कानून लाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल और अन्य तरीके से हम उनकी सहायता दे सके। मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा कि सरकारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े भ्रमित हैं, ये दावे किताबी हैं, बड़ी है दूरियां अब तक अमीर और गरीब में, किसी के कुत्ते पर रेशमी चादर, कोई बिन कपड़े बेहाल है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी। माननीय सुजीत कुमार। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to congratulate our countrymen because recently we reached the $4 trillion economy benchmark for the first time. And sir, we have become, it's well known that we have become the third largest economy by purchasing power parity index.
and the fifth largest economy by market exchange rate. Sir, we have amply demonstrated to the world our inherent strength facing the twin challenges of the Russia-Ukraine conflict and also the COVID challenges. Sir, we are all set to achieve between 6.2 to 6.5, 6.8. We can debate on the numbers, but very healthy growth numbers in FY 23-24. Fastest growing economy. Many speakers have already spoken about it. We are the fastest growing large economy in the world. And sir, we we also are very likely to become a $5 trillion economy by 2027. And sir, if sir, the dots are connected well, the economic dots are connected well, then we, by the end of the Amrit Kal, by the end of 2047, we will be a developed economy as well. Sir, now this is possible, sir, if, as I said, we connect all the economic dots properly. But in my view, sir, there are three things that the government needs to focus on to achieve these goals and the vision. Sir, first and foremost, fulfilling the aspirations of our citizens, particularly our youth and women, and I'll elaborate on it at length. Secondly, sir, boosting the MSMEs. Sir, today, Honorable Member Lakshmikant Bajpayeeji also during 0 hour spoke about the need to protect and support our MSMEs. And sir, I'll second him. I cannot agree with him anymore. Sir, we need to strongly boost our MSMEs and give impetus to our job creation and entrepreneurship. And third and foremost, sir, is the need to focus on education, innovation, and R&D. Sir, in her budget speech, Honorable Finance Minister also gave priorities to these three areas that I have just referred to. But, sir, I do find some lacuna, and I'll talk about it, sir. So let me go to the economic empowerment of our youth and our women. Sir, the Honorable Prime Minister spoke of 4 castes recently during one of the election speeches. He spoke of youth, women, farmers, and the youth, and the poor, sorry. Sir, let's come to the youth. We are the most youthful nation in the world. 2/3 of our population is under 35. Half of our population is under 25. When Honorable Member Ashok Mittal was speaking about the demographic dividend turning into demographic disaster, so that's a reality. That's a genuine concern that we have today. We need to take care of our youth, job creation, unless we want to see a demographic disaster. So talking of empowerment of women, sir, female worker population ratio is only 22%, which Honorable Member Chidambaram was talking about. Sir, I would like to refer to a model of women empowerment from my state of Odisha, sir, where 70 lakh women have been economically empowered over the years, and the self-help groups that they were part of are now becoming SMEs, small and medium enterprises. So this is a verifiable model of economic empowerment for women, which I think can really help us to achieve our economic goals. Thirdly, sir, doubling farmers' income. Sir, the government had spoken about doubling farmers' income by 2022. It has not happened. Sir, in Odisha, we have already doubled farmers' income a couple of years ago. In fact, we have received the Krishi Karman Award many times by Government of India, which showcases the importance and the impetus that we have given to farmers. And sir, talking of inclusive growth, sir, there was a wide gap between the per capita income, national per capita income, and the state's per capita income in the year 2020-21. Today, sir, that has been drastically gapped. The gap has been drastically bridged. And today, sir, we are almost at par with the national per capita income. And sir, I'll give you statistics. Sir, the development expenditure of Odisha has increased more than 20 times over the last 20 years. Sir, more than 20 times over 2 decades. This is a huge humongous spend on development expenditure, which is shown in all our indicators and parameters. Sir, I'll come to the focus on education, innovation, R&D. Sir, way back in the 60s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. We are nowhere close, sir, today. Sir, I will compliment the government of the day, and particularly Honorable Education Minister, that in this year's budget, the budget estimate of education is 1,13,000 crore roughly, which is 13% increase over the revised estimate of 22-23. Definitely, sir, this is the highest increase in outlay in expenditure over the RE of the previous year. But, sir, it's still not enough. It's only 2.8% of the budget, of our union budget. In contrast, sir, in Odisha, 30,000 crore has been earmarked for education
in this year's budget, which is 12.3% of the total budget outlay of the state. 12.3% of the total budget outlay of the state is for education, sir. Sir, I think inspiration can be drawn by union government from Odisha on this. Sir, I'm extremely passionate about education, but I was sorry and sad to note that in her budget speech, the Honorable Finance Minister spoke about 7 priorities, what she called Saptarishis. But education was not one of the priorities or Saptarishis. And we all know, sir, the foundation of any nation is education. No nation can progress economically, socially, or otherwise without focusing on education. So this is why I urge again the government to focus on education. Sir, I'll come to PM Poshan. Sir, Honorable Member Chidambaram ji spoke about, sir, child malnutrition. He gave some numbers: 16% undernourished, 35% stunted. These are numbers. Sir, again, I'm sad to note that the budget estimate for 23-24 for PM Poshan is 9% less than the RE, the revised estimate of 22-23. Sir, this will definitely reflect in poor learning outcomes and education outcomes. Sir, I'll come to, sir, R&D. Sir, Honorable PM has often spoken about India becoming a $1 trillion digital economy, which will be roughly 20% of our economy when we become a $5 trillion economy. But, sir, tell me, sir, which nation can become a digital economy without focusing on R&D? And today we spend only 0.7% of our GDP on R&D. Comparable numbers, sir: Israel 4.9, US 4.5, US 3, South Korea 4.5, China roughly 2. We are only at 0.7. Sir, I compliment the government. I laud them because they brought in the Anusandhan National Research Foundation bill. And Prime Minister has often spoken about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. But, sir, we need to really focus on Anusandhan or research if we want to become a developed economy in the next couple of decades, at least. And, sir, finally, sir, I'll come to the focus on MSMEs. Sir, we are growing, no doubt, but it is not a job-led growth. Sir, I'm afraid that is becoming a job-less growth. Sir, that is because, sir, our focus on MSMEs is not to the extent what it should be. Sir, today MSMEs are crying for capital. They do not have access to capital. Sir, there are statistics, sir, that if the loan amount is less than 1 crore, then the default is roughly 1%. But if the loan amount is more than 100 crore, then the default is over 40%, sir. So who takes loans over 100 crores? It is the large enterprises. But the MSMEs take loan less than 1 crore and their default rate is less than 1%. But still, sir, we have not done justice to our MSMEs by giving them access to capital, by giving them access to technology. So, sir, I'll again urge the government, sir, MSMEs are the job creators of our country. They create wealth for the nation. They contribute 30% to our GDP. Sir, they roughly create 123 million jobs. Sir, that is roughly 12 crore jobs. Still, we are neglecting our MSMEs. Sir, if we have to really focus on the economy, then we need to focus on the MSMEs because, sir, and sir, finally, sir, since you have, sir, since my time is over, sir, I'll just conclude by saying that, sir, India, that is Bharat, is a union of states. So if we have to grow socially and economically, then we need to take the states along. And this is why, sir, my Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, has always believed in the philosophy of cooperative federalism. Sir, for him, empowering the 4.5 crore Odias socially and economically has been his highest duty. And this is why, sir, he has been appealing in various forums through the parliament and otherwise that, sir, we need support from the government of India Honorable Sujit Kumar to better our daily density, to better our railway density, to have, sir, more funds which we are Please conclude. Please conclude. Sir, I'm concluding, sir. So this is what. Sir, the Honorable PM has spoken about Purvodaya, which is rise of the East. Sir, how can we have Purvodaya unless, sir, states like Odisha are supported economically by Government of India by, sir, giving us the funds that are due to us, by, sir, giving us the tele-density, the highways, the banking facilities that we, sir, badly need. Thank you. Mani Sri V. Vijay Sai Reddy ji. Deputy Chairman, sir, thank you very much. And I also thank my party president and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y. Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me an opportunity to speak on this particular subject, sir. Sir, for the last 10 years, India has been on the brink of massive economic transformation, which the opposition is not in a position to realize. Sir,
for the last 10 years, again, we have grown from being 10th highest GDP to 5th highest GDP in the world, which my colleague, Honorable former Finance Minister Chidambaram couldn't realize it. Sir, in the next 5 years, under the leadership of Modi ji, we are poised to become third largest economy in the world, crossing 5 trillion mark. Please, please. माननीय जयराम जी बैठकर बात नहीं, please. You speak to the chair. Sir, Deputy Chairman, sir. India continues to retain its fast-growing economy status even in the face of global economic slowdown. And we have faced the COVID situation. Even during COVID situation, there is no economic stride, and it continues to grow in the economy. Sir, last year, our GDP growth stood at massive 7.2%, which was twice the average of emerging market economies. And our Honorable former Finance Minister extensively spoke about the GDP. And he was all along talking negative about the GDP, and he couldn't realize that there is a growth. And currently, we have surpassed the market expectations and registered a 7.6% growth during second quarter of this current 2023-24. Sir, and coming to the tax collections, which the opposition has to realize the importance. There is a significant growth in the tax collections that has become the norm, and this has fueled the economic growth, sir. Sir, within 10 years, the direct tax collections have increased by 160%, and from 6.4 lakh crore in 2013-14 to 16.6 lakh crore in financial year 2022-23. Sir, this year, this 6 months from April to September, tax collections increased by 18%. Sir, till now, the GST collections, now up to this direct taxes and then indirect taxes, till now, GST collections for this financial year stands at 13.3 lakh crore, averaging 1.66 lakh crore monthly. This is whopping 12% hike over the last year. The increase in tax collections without substantial tax hikes goes to show that the government efficiency in improving our tax compliance and expanding the tax base. Sir, even there is no applaud from the treasury benches. Opposition, I'm very sure they will not applaud. Sir, coming to the digital payments. India continues to dominate the digital payment landscape. Sir, we recorded 89 million digital transactions in 2022, which is more than 4 leading countries combined together. Sir, this accounted almost half of the global real-time payments. And sir, and I also should, up to this, it's all positive points, sir. From now, I have to tell the negative points also, and at least to satisfy my friend Jairam Ramesh. Sir, we must not be complacent with our achievements. And sir, many issues continue to hinder the India's economic growth, sir. Sir, the first I would like to point out among the negatives is depreciating rupee, which is very, very alarming. Sir, rupee was worst performing Asian currency in 2022. Sir, for the first time ever, the value of rupee crossed 80 against the dollar. Currently, it stands at 83.4, which is very, very alarming. Sir, it is successively, the rupee is depreciating year after year, from minus 8.5% in 2018 and minus 10% in 2022. Sir, depreciation of rupee has got a significant impact on the overall development of the country, sir. Sir, depreciation of rupee has a direct impact on the manufacturing sector, since India is a net importer of raw materials and fuel. These two are very important import, because we completely depend on the fuel imports, sir. Manufacturing growth has already started showing the signs of stress
and has shown slowed significantly this financial year, fiscal year. Sir, as per RBI, every 5% fall in the value of the rupee, inflation increases by 15%, 15 basis points, that is 0.15%. Sir, foreign investors, this has another effect of depreciating the rupee. Sir. Foreign investors have pulled out 18 billion from Indian markets, more than 12 billion sell-off during 2008 global recessions. Sir, the next issue which I would like to bring to your kind notice is the reality remains that top 10% of the Indian population holds more than 60% of the country's wealth, while the bottom 15% of the population has only 6% of the wealth, sir. Even though the per capita income has more than doubled, that is 1.97 lakh since 2014, India ranks 142nd among 197 countries in terms of per capita income. The last point, sir, which I would like to bring to your notice is widening widening trade deficit, which is again alarming. Sir, India's overall trade deficit reached 122 billion in financial year 2022-23 compared to $82 billion in the previous year. So the government data indicates that India's trade deficit hit a record high in the month of October, and more so, more alarming is, all the more concerning is India's widening trade deficit with China, and historical high of 83 billion in 2022, and is expected to cross 100 billion mark in 2023 only towards China, sir, from China. Sir, in conclusion, we cannot afford to be complacent, and we should take the necessary steps. I request the Honorable Finance Minister, though there are positive aspects, there are also negative aspects in this economic growth. So I request the Honorable Finance Minister to address all these issues and make the economy more strengthened. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू माननीय वी विजय साई रेड्डी जी। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज सुबह जब पता चला कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी पूरी बातचीत टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और वगैरह वगैरह की चीजों में रहेगी। अर्थव्यवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं सिर्फ, और हाँ, बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर, माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे, तालियां बज रही थी सत्ता पक्ष से, बजती भी हैं। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी, तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए, तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाहें 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर, माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं? सर, कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड,
आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल स्वाति नारायण की। बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ। मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी पुनः ले जाऊंगा 14 में बिहार गए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना। सर बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष, बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं, बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी। और ये पुरानी बात है सर, एफडीआई को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए। जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी जी ने की, आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए। उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसको डिनाल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। हमें एड्रेस करना होगा। आपको असल में लग गया सर, बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ सर, आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। वेल्थ टैक्स को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर मैंने कहा वेल्थ टैक्स 16 में आपने अबॉलिश कर दिया। किसानों के बारे में सर मैं कहता हूं, आप कहते हैं शेयर बाजार उछल रहा है, बड़ी तारीफ होती है सर। शेयर बाजार उछले और एक किसान आत्महत्या कर ले, एक युवा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, तो आप किस चीज को कहेंगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहता। हाशिए के समूहों में पॉवर्टी की जो परिस्थिति है, आप बिहार का डेटा देखिए। आखिरी सर, एक सुधांशु जी बड़ी अच्छी चीजें बता गए, हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशानी है गरीबी से, भुखमरी से। 30 सेकंड सर। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर को कहता हूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? जय हिंद सर। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय श्री एलामारम करीम जी। Thank you, sir. The real state of our economy concerning around the people will be clearly understood by the latest RBI report, which says the household's financial assets, including bank deposits and cash equity investment, fell down sharply to 5.1% of the GDP in the fiscal year ended in the March 2023. See, on the other hand, the household debt increased 5.8% of the GDP in the financial year 2023, which is the second highest annual increase since independence. Recent RBI data
also reveals that bank, financial institution, credit to institutions bar business mark a decline, while personal loan portfolio has increased in volume during in the current quarter, which clearly signals further slowing down of the economy along with the rise in the people's indebtedness and resulted distress. Sir, in addition to these technical issues, there are a broader concerns about the overall economic direction of the country. Tax concession and incentives are given to the rich corporates, are widening the gap between the two Indias, the rich and the poor. Real income of the top 1%, the cronies of Modi government, rose by 30% from 7.9 lakh crores in 2019 to 10.2 lakh crores in 2022. While the real income of the lowest 25%, who are shouting slogans for you, by the 11% from rupees 3.8 lakh crores to 3.4 lakh crores. Sir, a relentless propaganda continues to boost the Indian economy's resurgence. The recent G20 summit was used to project India as an emerging economic powerhouse in the world. But the truth is that India has the lowest per capita GDP among the G20 countries. That was hidden. Ranks the lowest in terms of human development indices and records the lowest labor force participation rate, Chidambaram told you, reflecting the very high level of unemployment. The continued decline in the people's purchasing power is impeding the economic growth as this leading declining levels of domestic demand. This in turn leads to declining levels of investments. This means potentially further declining levels of employment guarantee. New proposals for investment in the economy have rapidly declined. Over the last year, 72.5% in government sector and 79% in private investments. Sir, massive propaganda bliss is launched over the grand success of Make in India. That was the slogan from 2014. Its target for manufacturing sector growth over this decade was 12.14%. The reality is that since 2013-14, this averaged only 5.9% per annum. The tall claim where it has gone. The share of the manufacturing GDP was targeted to reach 25%. This, however, remained stagnant at around 16.4%. But when 2011 and 11-12 and 21-22, jobs in manufacturing sector declined from 12.6% to 11.6%. I am concluding, sir. Deepening rural distress is reflected in the demand for jobs under MNREGS. Last year, this grew by 15.3%, and compared to 2019-20, this grew by 29.4%. But unluckily, the allocation for MNREGS drastically cut down in the last budget. Fresh evidence that have emerged about the Adani Group manipulation. That is also a part of this economic policy. Manipulation of stock prices of its companies calls for a serious probe. The final Financial Times and Guardian Already have time is based on over. inputs from the organized crime and Alarm corruption. Karim 1 ji, minute. your time is over already. A report project revealed Please how conclude. to close associates of such companies Conclude, please. I am and buy calling. millions of dollars of shares in Adani Thank you. companies. Thank Sir, you. these are the affairs of the Indian economy. The tall claim has no truth. I conclude with Thank this. you. माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी. Thank you, Deputy Chairman, sir. When we are crossing a river in a boat, if there is a hole in the boat
and the water starts trickling in, taking a mug or a tumbler and pouring the water out of the boat is not the solution, sir. Plugging the hole needs to be the solution. सर, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी के बारे में आंकड़ा बहुत सारे हैं. Important thing is plugging the hole, sir. I want to give you two, three examples. Most of my life, I was opposing the Congress policies, being in the Janata Party, Janata Dal Parivar, and later being part of the NDA. But I want to point out to you, sir, in 1985, the then government of Rajya Gandhi had launched the oil seed technology mission, because of which by 1993-94, we were almost self-sufficient in edible oil. Subsequently, governments started reducing import tariffs, as a result of which cheap edible oil started flooding the Indian market, and India became dependent on import of edible oil, sir. Sir, this has become a pretext for the government to give permission to genetically modified mustard. So giving permission to GM crops is not plugging the hole, sir. सर, इसी सदन में कल 6 दिसंबर है. 6 दिसंबर 2012 को तत्कालीन लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्टी ब्रांड रिटेल के डिबेट के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश से चीप गुड्स भारत आने के बारे में उन्होंने कहा था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने कहा था. अभी यहाँ पर अशोक मित्तल और कन्निमोली जी भी चाइना के बारे में जिक्र कर रहे थे. My information, sir, is that millions of people, including Falun Dafa practitioners, Uyghur Muslims in Xinjiang, are subjected to forced labor in Chinese prisons. And because of the violation of human rights, labor laws, and environmental laws, our neighbor is able to manufacture cheap goods, which makes us less competitive. Illegal organ trade of innocent prisoners like Falun Dafa, Uyghur Muslims are flourishing business there. So long as we do not plug the hole by starting a campaign to stop human rights violation, labor law violation, environment law violation inside China, I feel it is difficult for India's manufacturing sector to improve. Sir, finally, देश में जातियां हार्ड रियलिटी है सर. देश में कई सारे पिछड़े जातियों को आरक्षण के बावजूद विकास का फायदा पहुंचा नहीं है. इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व का मेरा पार्टी के सरकार बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस लागू किया है. जब तक देश में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते हैं, तब तक सरकार का बनाया हुआ पॉलिसीज का फायदा कई सारे जातियों को नहीं पहुंचेगी. Sir, hence, by ordering a caste-based census, we need to plug the hole. And finally, sir, I also request the government to give special status to Bihar. Thank you. थैंक यू. धन्यवाद माननीय अनिल हेगड़े जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. Yes, sir. Thank you very much. 3 minutes, giving me sir. the occasion to talk. Mr. Chidambaram, from Chidambaram to all opposition parties, were telling about the gravity of our Indian economy, how it is going on. No doubt, as our comrade tells, our GDP is grown to the level which we never expected. Ultimately, the GDP per person, where it is, that was the only question I want to ask to the government of India. There are a lot of abhayans. Prime Minister Khanna made this name, that name, and removed all the other name. But ultimately, it is getting to the really needy people. I am working mainly on tribal areas. There, a lot of projects are there, lot of money also there. But it is not coming down because of lot of hurdles. In the same way,
Indian economy, everybody is saying that, okay, we are this level, that level, but our Vijay Reddy, lately he came to the point. Before he has to. It is compulsion, not because of his intention. Compulsion, they have to have this one, this stand. Almost all parties, everybody is threatened. But what our government is saying, okay, semi-final over. All the 10 matches in, you see this one, Indian matches against the World Cup, everything we gave with, but at last what happened in Ahmedabad Modi Stadium? He was there with the blue jackets, our Prime Minister. We are also behind him. What happened? That is what going to happen in 2024. It is not be the hat-trick. Unless and until, maybe they can win, unless and until, they have to see the real problem. Not this $1 trillion. It is coming to, most of the money is coming to me also, just like me people, little, 1 or 5%, including that one maybe. But it is not going to the real people. That 80 crores. Our Manoj was telling clearly. So please spend some money or get some money from wherever it is and pump to the, in Manrega or whatever it is, which is helping people, real people, not the big corporates. I know when I am starting, if I am telling Adani, you will put the bill. Stop. Everybody is telling about Adani or other, then it is, time is over. I hope, I don't know. Now, just Yes, your time is over. 3 minutes already. Okay. That is the thing. 3 minutes. When we are telling about the real point, it will be coming. Anyway, everybody, you are giving 1 minute. Give me that 1 minute, just a minute only. Please, Because my request conclude. is, whatever our comrades say, this much crores and all, our Tamil Nadu people asking 5,000 crores only because of flood, that situation. But Kerala government, the dues in different areas is more than 5,000 crores. Release something, some little thing. That is where my request. Thank you very much. Thank you, Abdul Wahab. And for the great performance of Thank you, माननीय economic श्री सुशील कुमार growth in मोदी India. जी. 20 मिनट समय. माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति पर बोलने के लिए मैं पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। महोदय, अभी चिदम्बरम साहब भाषण कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि ग्रोथ इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द ग्राउंड, इज नॉट सीन ऑन द ग्राउंड। मुझे पता नहीं किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ तो ग्रोथ अगर वहां जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता तो फिर जीते कैसे, फिर परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आया? तो ग्रोथ देखने के लिए भी चश्मा चाहिए। अगर टीन का चश्मा लगा लेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अगर पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगा। और सती महोदय, ये जो दूसरी तिमाही है 23-24 की दूसरी तिमाही, आरबीआई से लेकर देश के तमाम जो अर्थशास्त्री थे उनका आकलन फेल कर गया। यहां तक कि आरबीआई ने भी कहा कि 6.5% ग्रोथ होगा और हुआ कितना? 7.6% ग्रोथ दूसरी तिमाही के अंदर इस देश के अंदर हुआ है। और मैं सदन को बताना चाहूंगा, ये जो 23-24 की दूसरी तिमाही है उसमें यूके का ग्रोथ कितना है? 0.6%, चाइना का ग्रोथ 4.9, अमेरिका का 5.2, रशिया का 5.5 और भारत का ग्रोथ है 7.6। और इसलिए आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला विकास दर वाला देश है। सभापति महोदय, महंगाई पर बार बार चर्चा हो रही है। अगर लोग इतने ही दुखी होते, इतने ही नाराज होते, तो फिर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। और इस देश में कितने प्रदर्शन हुए? सभापति महोदय, दुनिया के 50 देशों में लाखों लोग सड़कों पर आ गए पेट्रोल डीजल की महंगाई
खाने पीने की चीजों की महंगाई के विरोध में, लेकिन भारत में 10,000 लोग भी कई सड़कों पर नहीं आए। क्यों नहीं आए? महंगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन कारकों की महंगाई नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम है कि महंगाई का कारण नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है, कोविड कारण है, रूस यूक्रेन युद्ध कारण है, और दुनिया के तमाम देश महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और सौती महोदय, 4 चीजों के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई का असर दिखाई पड़ता है। पहला पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा एडिबल ऑयल खाद्य तेल, तीसरा फर्टिलाइजर और चौथा दाल। सौती महोदय, इन चारों में से कोई भी चीज हम भारत में पैदा नहीं करते हैं पूरे तौर पर। पेट्रोलियम पदार्थ 85% इंपोर्ट करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी तो भारत में बढ़ने से हम कैसे रोक पाएंगे? एडिबल ऑयल, दुनिया के बाकी देश से ये खाद्य तेल नहीं खाते, केवल भारत के लोग खाते हैं, और 60% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर, 60% फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। दाल, अमेरिका के लोग दाल नहीं खाते हैं, फ्रांस और जर्मनी के लोग दाल नहीं खाते, दाल खाता है भारत, और पैदा करता है म्यांमार, और दाल भी हमको और आयात करना पड़ता है। कृषि पौधे में सबसे पहले पेट्रोलियम डीजल के बारे में इस सदन को बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में पिछले 2 वर्षों में सितंबर 21 से लेकर सितंबर 23 का आंकड़ा मेरे पास है, पेट्रोलियम के दामों में कितनी वृद्धि हुई? 61%। पाकिस्तान में कितनी वृद्धि हुई? 60.68%। छोड़ दीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश की बात, अमेरिका में कितनी वृद्धि हुई पेट्रोल के दामों में? 46.31%। जर्मनी में 19.41, फ्रांस में 26.47, स्पेन में 24.92, इटली में 24.27। इंग्लैंड के अंदर पेट्रोल के दामों में 2 साल में 15% की वृद्धि हुई। और सदन को शायद ज्ञात नहीं होगा कि भारत में पिछले 2 वर्षों के अंदर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 4.56% की घटोतरी हुई है, यानी निगेटिव ग्रोथ हुआ है। यानी जहां सितंबर में 101 रुपया 34 पैसा पेट्रोल का दाम था, वहां 2023 में घटकर 96.72 हो गया। और सौती महोदय, उसी प्रकार डीजल, श्रीलंका में 115% और की वृद्धि हुई है डीजल के दामों में, पाकिस्तान में 67, फिर अमेरिका 48.68, जर्मनी 31.46, स्पेन, इटली, यूके में उस आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। और भारत में डीजल के दाम में 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई? केवल 0.96%, यानी केवल 1% की वृद्धि हुई। और आप कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ गया। और ये आंकड़े आप चाहे तो इन आंकड़ों को वेरीफाई कर लें। और सती महोदय, भारत सरकार ने 2 बार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया, और कुल मिलाकर 2 बार में 13 रुपया पेट्रोल पर और 16 रुपया डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। अब पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोई बता दे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भारत के अंदर कोई वृद्धि हुई है क्या? और सती महोदय, यहां भी राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या वैट को घटाने का काम किया, लेकिन जो विपक्ष के राज्य थे उन्होंने घटाने के बजाय बढ़ाने का काम किया। और उसका भी मैं आंकड़ा देना चाहूंगा सौती महोदय। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ है, गांधीनगर में पेट्रोल 96 रुपया 63 पैसा, और जयपुर में पेट्रोल 108 रुपया 45 पैसा, यानी 12% ज्यादा है गांधीनगर से जयपुर में पेट्रोल का दाम। गुवाहाटी में 98 रुपया गुवाहाटी में, और डायरेक्ट साहब के कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपया 42 पैसा। तो अगर केंद्र के कारण का बढ़ा होता तो आखिर कलकत्ते में 106 रुपया और गुवाहाटी में 98 रुपया क्यों है? लखनऊ में 96 रुपया
और बेंगलोर में 101 रुपया, गोवा में 97 रुपया, रायपुर में 102 रुपया, भोपाल में 108 रुपया और अमरावती में 111 रुपया। महोदय, कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की और बीजेपी शासित राज्यों ने उसके दाम में कटौती की। और जब बात आती है एलपीजी की, तो सदन को यह मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी के दामों में और जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलता था उसमें कुल मिलाकर 300 रुपए की राहत दी है और सामान्य कंज्यूमर को 200 रुपए की राहत दी है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 28,000 करोड़ का, और भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया उनको पिछले साल देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम किया है। सती महोदय, कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। पेट्रोल में ब्लेंडिंग, ये जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, ये जब 14 में नरेंद्र मोदी जी आए, इस समय 1.53% पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। आज कितनी ब्लेंडिंग हो रही है? 12%। और इससे देश को कितना फायदा हुआ? विदेशी मुद्रा 73,000 करोड़, डायरेक्ट साहब 70,000, the country has saved 73,000 crore as a foreign exchange saving. Carbon dioxide emission 402 lakh metric ton emission कम हुआ। Amount paid to the distilleries 1,26,000 crore और फार्मर्स को कितना मिला? 76,000 करोड़ रुपया और किसानों को मिला है। सती महोदय, ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सती महोदय, आप कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि उसी प्रकार फर्टिलाइजर, सती महोदय, फर्टिलाइजर भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ की सब्सिडी का अपने बजट में और प्रोविजन किया, 3,70,000 करोड़। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर का जो रॉ मटेरियल है और फर्टिलाइजर, ये बाहर से आता है। भारत के अंदर केवल 40% तैयार होता है, बाकी बाहर से आता है। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यूरिया के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया का दाम है 2,450 और किसानों को कितने में मिलता है? 266 रुपए में किसानों को मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ सब्सिडी ऑफ 2,183 पर बैग टू द फार्मर्स इन दिस कंट्री। डीएपी में सब्सिडी कितनी मिल रही है? 2,501 रुपया। एनपीके में सब्सिडी कितनी? 1,918। और आपने सारे कारखाने बंद कर दिया। गोरखपुर का खाद का कारखाना नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया, बरौनी का खाद का कारखाना हमारी सरकार ने चालू किया। और सती महोदय, अभी कह रहे थे कि करोड़पति बन गए। ये बात ठीक है कि हमारे करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, चोरी करके कोई करोड़पति न बने। और ठीक है डायरेक्ट साहब, in 1617 there were only 68,263 crorepati in this country. Now the figure has gone to 1,69,000. तो जो टैक्स पेयर है, जो 1 करोड़ से ज्यादा जिनकी अर्निंग है, जो टैक्स देते हैं, उनकी संख्या 68,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गई। ये तो खुशी होना चाहिए कि आप दुखी है कि करोड़पति क्यों हो गए। तो सब लोग कंगाल बना दीजिए, सब लोग कंगाल हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सदन को बताना चाहूंगा, ये नरेंद्र मोदी जिनके कारण 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए। पिछले उनके पहले कार्यकाल में, दीदी थोड़ा 1 मिनट, उनके पहले कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए और मिडिल क्लास में शामिल हो गए। सती महोदय, 15-16 में इस देश में 24.85% गरीब थे और 19 और 21 में घटकर कितना हो गया? 15%। तो आखिर गरीब कहाँ चले? गरीब देव इंटर ये मिडिल क्लास। सती महोदय, और यूएनडीपी की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि 2005-6 में 64.5 करोड़ गरीब थे इस देश के।
64.5 करोड़, और 2021 में घटकर हो गए 23 करोड़। 15 साल में इस देश के अंदर 41 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए और वो मिडिल क्लास में प्रवेश कर गए। तो सती महोदय, एक और हमने जहाँ गरीबों का ख्याल रखा, वहां पर यहाँ पर लोग उद्योगों के माध्यम से पैसा कमाए, इसका भी ध्यान रखा है। और सती महोदय, अभी बैंकों की बात हो रही थी, और कि बैंकों का एनपीए की क्या स्थिति है। बैंक का प्रॉफिट 22-23 में पहली बार बैंकों का प्रॉफिट, दे हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख करोड़। नॉट अ सिंगल बैंक इज इन रेड, दे आर अर्निंग प्रॉफिट। ये आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? 22-23 में क्यों 1 लाख करोड़ का 22-23 में बैंकों को प्रॉफिट हुआ है? और भारत सरकार ने जो कैपिटलाइज करते थे, बैंकों को पैसा देना बंद कर दिया। 3 साल से 1 पैसा नहीं दिया बैंकों को, और बैंक अपने बलबूते जो हैं, और जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो 11.2 था 17-18 में, घटकर 5.2% हो गया। तो सती महोदय, ये जो एनपीए अगर कम हुआ है तो इसका कारण क्या है? सती महोदय, जीएसटी का कलेक्शन, एक साल में 6 बार जीएसटी का कलेक्शन, दैट इज क्रॉस 1,60,000। जो लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं जीएसटी को, तो अगर हिम्मत है तो अपने राज्य हिमाचल में और जहां आपकी सरकार कर्नाटक में जीएसटी को हटा दीजिए। अगर वो गब्बर सिंह टैक्स है तो जीएसटी के कारण 1,60,000 करोड़ का कलेक्शन एक साल में, एक बार नहीं बल्कि 6 बार इस एक साल के अंदर हो चुका है। और सती महोदय, एक समय था कि मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आज 99% मोबाइल मेड इन इंडिया है। हमने मोबाइल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और इस साल 11 बिलियन का मतलब हो गया 88,000 करोड़ के मोबाइल फोन जो है, और हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया है। सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 10th इकोनॉमी थी दुनिया की 2014 में, और सेकेंड टर्म में वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उन्होंने देश की जनता को गारंटी दिया, मोदी की गारंटी, कि तीसरे टर्म में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हम जर्मनी को पीछे छोड़कर हम 2 साल में 4th हो जाएंगे, और फिर जापान को पीछे छोड़कर 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और सती महोदय, केवल हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, 27-28 तक भारत 3rd लार्जेस्ट केवल जीडीपी में नहीं बनेगा बल्कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी बदल जाएगा। हमारा सपना है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सके, एक एडवांस इकोनॉमी बन सके, और उसी दिशा के अंदर भारत की सरकार काम कर रही है। और इसलिए सती महोदय, हम लोगों ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। अभी जो आंकड़े आए अक्टूबर के, वो 4.87, आरबीआई का 4 +2 का जो रेंज है, अक्टूबर 2023 में वो आंकड़ा 4.87 का है। तो हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। और जहां तक खाद्य तेल की बात है, खाद्य तेल पिछले 1 साल में उसके दाम में 18% की गिरावट है, मस्टर्ड ऑयल में, वनस्पति में 12% की गिरावट है, सोया में 20%, पाम ऑयल में 15%। यद्यपि ये खाद्य तेल भारत में पैदा नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने और उसके अंदर उसको भी और नियंत्रित करके दिखाया है। और साथ ही महोदय, उसी प्रकार जो गरीबों के लिए जो 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, और अब तो सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल तक
81 करोड़ लोगों को 5 साल तक दिसंबर 2028 तक और अनाज मिलेगा। अंत में आप घंटी न बजा दे, मैं एक बात और कह दूं, इस बीच के अंदर हमारे मित्र कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर सभा में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं चुनौती देता हूं, कभी भी किसी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कभी ऐलान नहीं किया था। नंबर 1। नंबर 2 कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसी समय रघुराम राजन कमेटी का गठन करवाया था नीतीश कुमार जी ने चिदम्बरम साहब से मिलकर, और रघुराम राजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि अब देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं तो 14th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि 5th फाइनेंस कमीशन ने 69 के अंदर पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट दिया था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने 2015 में विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी शब्द आया ही नहीं है। तो महोदय, जब 14th फाइनेंस कमीशन ने, रघुराम राजन कमेटी ने, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने खत्म कर दिया, और जब लालू जी देश में रेल मंत्री थे, बड़े ताकतवर मंत्री थे, रात को 12 बजे राष्ट्रपति को उठाकर बिहार की विधानसभा को भंग करवा दिया, उस समय उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? और नरेंद्र मोदी ने तो विशेष राज्य के दर्जे से बिहार को जितना मिलता उससे ज्यादा दे दिया। जो पैकेज दिया, पीएम पैकेज, 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। पीएम पैकेज केवल भारत में अकेला राज्य बिहार है जिसको केंद्र की सरकार के द्वारा पैकेज दिया गया। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। आंध्र का तो घोषणा थी, सोनिया जी का कि घोषणा थी सदन के अंदर कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहाँ मिला? अब देश के किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिल सकता है। राज्य को मदद मिलेगी, केंद्र मदद करेगा, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा न बनाए तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को भरोसा है। यही व्यक्ति जो महंगाई नियंत्रित कर सकता है, यही व्यक्ति है जो देश का विकास कर सकता है। और इसीलिए आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और 4 राज्यों के अंदर सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार चल रही है। देश के 51% क्षेत्रफल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। और इसलिए सती महोदय, अर्थव्यवस्था को हमने बेहतर बनाकर दिखलाया है। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी पर कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारत को जिस संकट से उबार कर और उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे, ये ग्रोथ, ये सड़क पर, ये नीचे दिखाई, जमीन पर दिखाई पड़ेगा और लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, सांप्रदायिक और जातीय गणना के नाम पर वोट नहीं देंगे। जातीय गणना का मुद्दा तो बहुत उछला था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कहाँ लोगों ने वोट दिया, कहाँ वो मुद्दा बना? इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ला, 8 मिनट्स। धन्यवाद सभापति जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस आर्थिक मुद्दे पर इस सदन में बहस की अनुमति दी, जो कि एक बहुत जरूरी आज के वक्त में है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और ना अर्थशास्त्री की तरह बोलूंगा। मैं एक सामान्य व्यक्ति के जो समझ में आता है उसी आधार पर अपनी बात रखूंगा। मेरा अपना मानना है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति, इन दोनों पर कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी को समानता रहती है और रहनी चाहिए। यही अभी तक की परंपरा रही है। अगर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए थे, तो उसके बाद चाहे देवगौड़ा जी की सरकार हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, अटल जी की, उन्होंने उसको पालन किया था। एक बार मैं पत्रकार के रूप में नरसिम्हा राव जी के साथ जो है स्पेन गया था और वो प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पत्रकारों ने प्रश्न उठाया कि आप तो ये आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि आप इंडिया में ये चेंजेस कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन कल आपकी सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो उन्होंने बड़ा फेमस सेंटेंस वहाँ बोला था, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल।
कोई भी सरकार आए इसको बदल सकती नहीं है। तो ये चीज जो है लगातार चलती रहनी चाहिए, ये नीतियां लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन कुछ प्रयोग पिछले 10 साल से हो रहे हैं जिसमें पिछली सरकारों की चीजों को अंडू करने की कोशिश हो रही, उनको बदलने की कोशिश हो रही। हमारे मित्र सुशील मोदी जी सम्मानित अभी बात कर रहे थे कि चुनाव के नतीजों से, जो चिदम्बरम साहब की बात का जवाब दे रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, तो उन चुनाव के नतीजों का हवाला दिया। सुशील जी, चुनाव के नतीजे 5 साल पहले क्या थे? तीनों राज्य हम जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद लोकसभा हार गए थे 5 महीने बाद। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये तर्क कहीं बैठता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस जो बहस को हम उसी गंभीरता से रखें जिस मुद्दे पर आर्थिक स्थिति की वो है, और उसकी हम शुरुआत चीज से करते हैं। और अगर इसके आंकड़ों का, इलेक्शन कमीशन का आंकड़े है, पूरे उसमें 4,81,00,000 वोट जो है भाजपा को मिला है और 4,91,00,000 कांग्रेस को मिला है, 10 लाख ज्यादा। तो हम इसको अगर उस तरह से गणना करके देखेंगे तो फिर ये बात कहीं रही नहीं जाएगी कि, तो इसलिए जो है हम समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने बहुत मतलब गंभीरता से इस विषय पे डिस्कशन के लिए रखा है, तो हम उसी पे जाते हैं। सबसे पहले पुराना गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो वादों पे जाते हैं। तो वादा नंबर 1 क्या था कि हम काला धन वापस लाएंगे। वापस तो आया नहीं, उल्टे जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जिसको कोट किया था सुधांशु जी ने, 6 लाख उद्यमी जिनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं विदेश चले गए। यहाँ की 2 लाख ने तो नागरिकता सरेंडर कर दी भारत की। और उद्यमी जब जाता है तो सोचो कि वो लाखों लोगों का जो है, वो लाखों लोगों का के रोजगार को जो है छोड़ के जाता, जो भारत में मिल रहा था। वहां जाके उद्योग लगा रहे हैं, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और उसके अलावा जो है यहीं से पैसा जा रहा है। तो उल्टे जो पैसा 4 लाख करोड़ आना था, 10 से 15 लाख करोड़ के करीब पैसा बाहर जा चुका है देश का। ये गंभीर विषय है, इस पे मुझे लगता है वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए कितनी भारी संख्या में उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बाहर क्यों बस रहे हैं। तो ये उनको सोचने की बात है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि देशभक्त नहीं थे, देशभक्त थे। मॉर्गन स्टैनली के रुचि शर्मा ने 2016 में फिक्की की स्पीच में कहा था, 2016 में वार्निंग दी थी, तब मुश्किल से जो है 50,000 लोग गए थे कि क्यों भारतीय बिजनेसमैन, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उनको रोको। तो ये चीज देखने की है कि क्या ये सरकारी एजेंसियों के जरूरत से ज्यादा दबाव की वजह से जा रहे हैं या क्या वजह है, उनके साथ अन्याय हो रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा वादा था 50 रुपए लीटर पेट्रोल, 40 रुपए डीजल, हमारी सरकार आएगी। आप कह रहे हो कम हो गया, मुझे तो कहीं कम नहीं दिखाई दे रहा। अब आप गणना बता रहे हो कि इस राज्य में 96 का, वहां 106 का, 50 और 40 रुपए का तो नहीं है जो पहले था कि 50 और 40 रुपए में बिकेगा डीजल पेट्रोल। वो वादा तो पूरी तरह गलत साबित हुआ। और ये तब मैं तो योजना मंत्री था, जो है ब्रेंट क्रूड की रिपोर्ट रोज आती थी। हमारे जमाने में $115, $120 का जो है तेल मिलता था, क्रूड ऑयल, और उसके बाद जो है हाँ हम 60 रुपए पे देते थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सस्ता, यहाँ तक कि एक वक्त $22 पे पहुंच गया था इस सरकार में, और अभी भी 40, 50, 60 के अल्ले पल्ले रहता है, 80 के अल्ले पल्ले रहता है, पहले से बहुत कम है। फिर भी दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसको जो है हमें देखना चाहिए कि हम क्यों 100 के पार चला गया पेट्रोल, और डीजल भी उसी के करीब करीब पहुंचा। इसका आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, माने कि माल ढुलाई, तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और ये जनरल महंगाई को बढ़ाने में सबसे गजब इसका मतलब प्रभाव पड़ता है। और ये आप कहें कि चुनाव के पहले कम कर दो, चुनाव खत्म होते फिर बढ़ जाता, तो ये चुनाव से लिंक नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं या क्रूड ऑयल के दाम के हिसाब से उसका फायदा जनता को देना चाहिए। तीसरा वादा था कि 2022 तक हर किसी को पक्का मकान। क्या हुआ पक्का मकान हर किसी का? तीसरा वादा पूरा हुआ, और ये वादा तो लाल किले से दिया गया था, आज तक कोई पक्का मकान नहीं बना। चौथा वादा था डॉलर के मुकाबले रुपया। जब 50 हो गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इतना हंगामा हुआ था कि ये देश की इज्जत गिर गई, देश का अपमान हुआ है। रुपया कमजोर हो गया, मतलब भारत देश का विश्व में अपमान हो गया। इतना हंगामा, वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, क्या क्या नहीं कहा गया था। आज
80 से लेके 85 के बीच में डॉलर है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला जाता। कहीं किसी किस्म का देश का अपमान नहीं हो रहा कि पांचवा वादा भी उसी तरह से, चौथा वादा भी उसी तरह से विफल हुआ। और पांचवा वादा 2 करोड़ रोजगार, जिसको अन्य लोगों ने भी बोला है, तो अब तक जो है मेरे हिसाब से 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखें जो आंकड़े हमारे पास है, बेरोजगारी की दर जो 5% होती थी 2014 से पहले, वो 10.09, 10 मतलब 11% के करीब हो गई। ब्लूमबर्ग ने सेंट्रल फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं, बिना नौकरी के 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, और क्वालिटी ऑफ जॉब तो बहुत ही कम है इसके हिसाब से। पिछले साल 1,70,00,000 लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 38,850 को सिर्फ नौकरी मिली। इंजीनियर जो पढ़ाई लिखाई में जो इंजीनियर हैं बड़े बड़े उसमें किए, वो सब जो है अप्लाई कर रहे हैं चपरासी की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी। वही अगर अच्छी अर्थव्यवस्था होती तो पढ़े लिखे लोग ऑफिस में फैक्ट्री में काम कर रहे होते और उनको जरूरत नहीं पड़ती कि इस तरह की कोई चीज करते। आप देखो ना, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज देना पड़ रहा, अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये योजना खाद्य सुरक्षा बिल, जयराम जी यहाँ बैठे हैं, मनमोहन सिंह सरकार लाए थे और उस समय ये लागू हुआ, तो उसी प्रावधान की अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं, नई सरकारें आती हैं देती, लेकिन जो है इसको चालू रखना चाहिए, देना चाहिए, गरीब को भोजन मिलना चाहिए। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये कभी सोचा? आज हालत ये है कि अगर वो बेचारा परेशान है, वो नौकरी करना चाहता है लेकिन नौकरी नहीं है, वो नहीं मुफ्त अनाज लेना चाहता, वो अपमान के साथ नहीं जीना चाहता, लेकिन हम नौकरी नहीं दे पा रहे, हम रोजगार नहीं दे पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो घर में बैठा मजबूरी में। आपने देखा कोरोना के वक्त लाखों लोग पैदल 800-800 किलोमीटर चल के गए, क्योंकि 4 घंटे का नोटिस दिया गया। अगर 2, 4, 5, 10 दिन का नोटिस होता, लोग ट्रेन से पहुंच जाते कैसे? और वो लौट के आए नहीं, कभी कोशिश नहीं कि उनको वापस ले आ जाए, वो गांव में बैठे। तो ये जो है हम देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम उनको काम देना चाहिए। अगर 10,000 सरकारी नौकरी का अगर वो निकलता है वैकेंसी, तो 4-4 लाख लोग हो जाते हैं, लाठी चार्ज करनी पड़ती है। पुलिस में भर्ती का देख लीजिए, टीचर्स की भर्ती का देख लीजिए, कैसे लोग जो है लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के हमें रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए कि नौबत ना आए। छठा, महंगाई का सबने बोला, डायरेक्ट ने भी बोला, सारे लोगों ने यहाँ पे बोला। कौन चीज सस्ती है बता दीजिए? न गेहूं सस्ता, न चावल सस्ता, न तेल सस्ता, न नमक सस्ता, न चीनी सब्जी, न सब्जी दाल सस्ती, न सीमेंट सरिया, ईंट मकान, दही जलेबी तक सस्ती नहीं। तो क्या स्थिति है? जब कुछ सस्ता नहीं है, रेल का किराया तक बढ़ रहा, तो जो महंगाई दर है इसको काबू करने की आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई जो है बहुत जबरदस्त बढ़ती चली जा रही। जो वादा था उसके मुकाबले महंगाई दर नहीं है। 7वां वादा स्वच्छ भारत था, बहुत अच्छी बात, हम सब लोग खुश रहे। 1-2 साल तो अच्छा चला, कई मंत्रियों ने झाड़ू लगाई, सड़कें साफ की, इधर किया उधर किया, खूब फोटो छपे, गांधी जी का चश्मा लगा के जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगे। आज कोई सफाई पे बात ही नहीं होती, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह पिए, और टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस तरह से फिल्म, जब भी कोई काम शुरू होता है सरकार में, पहले बॉलीवुड से फिल्म बनवा देते, फिर वो फिल्म के जरिए जो है पूरा ही चलता है। और आज टॉयलेट्स की हालत देखो गाँव गाँव में, भाजपा के हमारे सांसद बताते हैं कि किस इस तरह की स्थिति है। सर, टॉयलेट्स की स्थिति जो है वो स्टोर बन गए हैं, गोदाम से बन गए, लोग उनमें कपड़ा सामान दूसरी चीजें रख रहे हैं, क्योंकि उनमें पानी का समुचित इंतजाम नहीं, उनको सफाई का इंतजाम नहीं, तो वो टॉयलेट से बने बनाए पैसा बर्बाद, उनका कुछ हुआ नहीं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि टॉयलेट्स की जो बुरी हाल है उसको भी देख के काम करें, है ना। 8वां, सर थोड़ा सा टाइम दे दी, 5 मिनट। 8वां, अभी तो ये तो सर सिर्फ ये, अब तो मैं सुझाव दूंगा, अब कुछ सुझाव भी है ना सरकार में, तो पॉजिटिव डिस्कशन पे हूँ। 8वां वादा, सबका साथ सबका विकास। सर, सबका साथ सबका विकास 8वां वादा। सर 10 वादे पर उसके बाद सुझाव 10 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 8वां वादा सबका साथ सबका विकास। जब मैं योजना मंत्री था तो मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और वहां पे आते तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया था योजना में,
जिसमें कैसे राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्र सरकार को मदद देनी चाहिए। Last किसी 30 भी seconds. विपक्षी दल नहीं सकते Round up to 30 seconds. सर प्लीज, किसी सरकार को जो है विपक्षी दलों के साथ भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसी के बाद फ्लैगशिप स्कीम में सर 20% का मतलब जो 20% का फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी राज्य सरकारों, उन्हीं के सुझाव के आधार पर। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो विपक्ष की सरकार है उनको न जीएसटी का पूरा एलोकेशन मिलता है, न अन्य सहायता नहीं मिलती, और उनके साथ तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? अगर जो इस तरह से भेदभाव होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। आज और यही नहीं, आपको अगर पता हो कि नवा वादा जीडीपी ग्रोथ हमारे जमाने में 7.03 रही और 9 तक टच की थी, अब 5.25 है। हालांकि 6 का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 5.25 का आंकड़ा हमारे पास है। 10वां वादा है जीएसटी, सरल टैक्स के लिए पूरा, जैसे भारत आजाद हुआ, बस यही आखिरी वादा है। इसका तो और लिस्ट लंबी है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जीएसटी सर, जीएसटी आपको पता है कि जैसे भारत आजाद हुआ तो उसी तरह आधी रात में कर प्रणाली, ऐसी सरल कर प्रणाली है कि पूछो मत। आप व्यापारी से जाके पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, परेशान है जिस तरह का जीएसटी है, जिस तरह से तंग हो रहे हैं इस जीएसटी से। और भाजपा के हमारे लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, व्यापारी वर्ग काफी इनके साथ रहा, उस सब इनसे रोते हैं आके कि क्या हमारी गति है। ये जीएसटी का सरलीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि सर बड़ा जरूरी है। इन्होंने रामायण की चौपाई सुधांशु जी ने, तो उसी सुंदरकांड की हम चौपाई पढ़ते हैं सर। सचिव वैद्य गुर 3 जब, प्रिय बोले भयास, आपका सेक्रेटरी, आपका डॉक्टर और आपका गुरु अगर डर के मारे आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा, तो राज धर्म और दे, तो राज धर्म और दे 3 का होत बेगही नाश। इनकी चौपाई के जवाब में तुलसीदास जी की चौपाई है। अब सर सुझाव में राजीव जी, ये बात लागू कहाँ कर रहे हो? ये बात किसके बारे में कह रहे हो? समझने की है, ये बात समझने की है। और श्री कार्तिकेय शर्मा सर, मेरा रह गया सुझाव तो रह गए, एक मिनट सर। श्री कार्तिकेय शर्मा सुनिए सर, मेरा सुझाव चेयर लिख कर दे देना। ठीक, राजीव जी, you have taken 50% more time than time allocated. Thank you, Chairman, sir. And every time you cross the time limit, I looked at wish to express my gratitude to you, allowing me to speak on this very important discussion. 1 second. Last 30 seconds. 30 seconds. एक तो शेयर मार्केट से सब सारी खुशी नहीं होती है। शेयर मार्केट में जो भी हो, लेकिन पैसे का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कुछ लोगों के पास सिमट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है, वो नहीं होना चाहिए। पहला सुझाव। दूसरा, निर्यात और आयात के मुकाबले निर्यात ज्यादा, आयात कम है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, इस पे सब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो सरकार से, वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसका ख्याल रखें कि किसी तरह से हमें निर्यात बढ़ाया जाए और आयात हमारा कम किया जाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गडकरी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी $1.5 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना है। तो मेरा सरकार से सुझाव की कोशिश करनी चाहिए। श्री कार्तिकेय शर्मा, लास्ट कम ऑन। एक तो रह गया सर, ईज ऑफ बिजनेस रखिए, कुछ रिजर्व में रखिए। ईज ऑफ बिजनेस में क्या है कि परेशान है लोग ईडी और जीएसटी वालों से, और इसके अलावा आप इधर से बोल रहे हो, कुछ रिजर्व में रखिए, से रेड टेपिज्म से। तो इस पे सर हमें कोशिश करनी चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाना चाहिए। और कार्तिकेय जी 3 minutes Sir. Go ahead. Sir, from inheriting an Indian economy which was slipping southwards to being painted as the global bright spot, with the Indian economy registering the fastest growth rate among large economies for 2 successful fiscals, and in the course for the 3rd time in financial year 24, is a stellar achievement of the Modi government that invites deep analysis. The journey of Indian economy was steered clear through the phases of global slowdown in 2019, COVID lockdowns, commodity price steep escalation due to the war in Ukraine and global tensions, and tightening of global financial conditions. India's economy has been the fastest growing among the world's 20 largest economies for the 7 of the past 9 years. And those were only the 7 years in the past 76 years that India has achieved this distinction. India's USD 3.3 trillion GDP
overtook that of the UK in the fiscal year ending March 31, 2022, making it the 5th largest economy in the world. The Indian economy, according to the IMF estimates, will emerge as the world's 3rd largest economy by 2027, hopping over Japan and Germany as its GDP crosses US $5 trillion. By 2047, India aspires to be a developed economy. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Modi. Sir, I would like to quote a couplet from the famous poet Wasim Barelvi. दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो डुबाते रहे मुझे और मैं उभरता चला गया. दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया. Sir, we have achieved success in improving our GDP from 2.3 trillion in 2014 to 3.75 trillion now. On the ground, in 13-14, our per capita income was 68,000 rupees, which has now increased to 1,80,000 rupees in 22-23. In 2014, the capital expenditure was 3.9 lakh crores, and the union government under the leadership of Prime Minister has increased it to rupees 10 lakh crores by 2023. A senior member of parliament before me spoke about the issue of states. The union government has increased the allocation to the states under the various schemes from rupees 30 lakh crores during 2004 to 14 to about 100 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. Between 2004 and 14, tax collections was 19 lakh crores, which has now increased to 70 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. GST collection has reached rupees 1.87 lakh crores in April 2023, and monthly average GST collection is 1.69 lakh crores. Our foreign exchange reserves were 309 billion. Today they stand at 593 billion. So, sectors like hydrogen, semiconductor, electric vehicles, solar, energy, defense, Sharma ji, drone please space, mining. And Please conclude, Sharma ji, please. Thank you, sir. Next speaker is GVL Narasimha Rao garu. GVL Narasimha Rao garu. Thank you, Chairman sir. When we speak about the resurgence of Indian economy, it is important for us to reflect on India's historical economic stature and see in that trend, in that over centuries, how India has become, how over decades India has become stronger. Today, we are certainly celebrating as the 5th largest economy. This is a great achievement for the country. We have been able to, from the 10th position in 2014, in a manner of few years, we have reached the 5th largest economy position today. And a report yesterday by the S&P, it states how India is going to be the 3rd largest economy by 2030. So by the time Honorable Prime Minister completes his term in 2029 and gets ready for his 4th term, India would have become the 3rd largest economy in the world. And if you go back a few centuries ago, in ancient India, we were the largest economy of the world. We were known as the golden bird, Sone ki chidiya, until 5th century AD. This remained India's position in the global, in the global scenario. But 1,000 years of rule by invaders, by foreign rulers, has robbed India not only of its rich wealth, it also robbed India of its confidence. So when Honorable Prime Minister took over as the Prime Minister of the country, he has given a complete new direction to India's economy. He has instilled confidence in India's growth story, and Amrit Kal has truly begun. We are certainly passing through this Amrit Kal. And Atmanirbhar Bharat is
is the strategy for achieving India's preeminent position in the global economy. And I would like to tell our friends from across the treasury benches, the opposition benches, I'd like them to know. In 2004, when UPA came to power, India was the 12th largest economy. They were in power for 5 years until 2009. India moved from the 12th to the 11th rank. And they remained in power for another 5 years. In those 5 years, they could take India from the 11th to only 10th rank. But look at the geometric growth experienced during the rule of the Honorable Prime Minister. India, I think you have blamed it as Hindu rate of growth. You have used governments of the Congress denomination in the early years of independence have used this term Hindu rate of growth to deride Hindu religion. But during 10 years of your rule, what have you done to Indian economy? You have not been able to, you claim to have given great growth during the years of Manmohan Singh regime, but all that India could move was from the 12th rank to the 11th rank, going on to 10th rank. But Prime Minister Modi ji, in a manner of 9 years, he has taken India to the 5th rank, and in a manner of years, by the completion of his next term, we are going to be the 3rd largest economy in the world. This is certainly a huge achievement for the country, and that is what is giving the BJP and Honorable Prime Minister and his leadership a huge fillip in India's elections. So, inflation. Our friends, I have busted their theory of growth. We gave growth. We were high growth. We gave a high growth economy. And I told them how India's position remained globally at almost at the same level through 10 years of UPA. And let me now bust their inflation claims. During the first 5 years of Prime Minister Narendra Modi ji, the average inflation rate in India was only 4.4%. Well below the RBI ordained level, which is range between 4 to 6%. Look at the Congress party's performance. Look at the UPA performance. What was the inflation levels in the UPA rule? In 4 years, between 2004 and 2014, inflation levels were well below 10%. Double-digit inflation, what UPA has given this country. It was 13.9% in 2009 and 10. And under Prime Minister Modi ji, at a time when the world is experiencing one of the highest levels of inflation, India has been able to contain inflation well below even the RBI levels. Let me give you some numbers. The US inflation level is above 7%. Let me give you the exact number. UK, US experienced over 7%, highest inflation in 40 years. UK is experiencing one of the highest inflations in the last 30 years. It is currently 7.9%. It was in June 2023, which is a high after 41 years. Europe is also struggling with inflation. Germany, which is Europe's largest economy, also has one of the highest inflation levels. It is only India which has not only maintained high growth during the post-COVID period, it has also maintained very, very low to moderate levels of inflation. So the friends from the Congress who claim there is high inflation must look back, because any comparisons that you do, any comparison of any performance, you have to do over time. You have to do spatially, and you have to do cross-sectionally. And time series performance clearly tells us how Congress governments have given only inflation,
and not a real growth. Let me give some more numbers. One of the highest levels of inflation in India's post-independent India were 19.3% in 91-92 under a Congress leadership, 95-96, 12.8%, and under Srimati Indira Gandhi, it even touched double digit. It crossed even 30% for 2 years. So this is the Congress story. So every time Congress comes to power, they bring inflation along, and it is only the BJP-led governments, the NDA governments under Prime Minister Narendra Modi ji, which have given relief to the common man. जब कांग्रेस आती है तब महंगाई लाती है. I think this would be a nice slogan that would go along with them, because in Karnataka, where they came to power only in early this year, in May this year, soon after they came to power, they hiked milk prices by 3 rupees per liter. They hiked electricity charges, though through a very indirect mechanism, by increasing fuel and power purchase cost elements in this. They have increased every commodity that a common man needs for his survival. So the Congress Party's only guarantee is Mehengai guarantee, is inflation guarantee, and nothing else. So if you look at our performance, India's GDP growth for the last year was 7.2%, the fastest growing economy of all the major economies in the world. And this has been possible. This high growth trajectory has become possible because of a measured response, because of a judicious economic policies that the government pursued, mainly during the COVID and post-COVID era. And friends from the opposition, all of them claim that India's economy can only be revived by putting money directly into the hands of the people, by giving helicopter money. But that kind of any country, all countries that have followed that prescription have actually failed. And these are the countries which are experiencing one of the highest inflation levels in half a century. Prime Minister Narendra Modi ji's economic vision and economic policy is today being hailed as the best in the entire world. What has made this kind of an economic transformation, this kind of a turnaround possible? Let me give a few illustrations. Let me cite a few cases. One, the Atmanirbhar vision. I think COVID, which is a challenging period for the entire globe, was used to unveil new economic vision, that was Atmanirbhar Bharat vision, that has actually helped India transform its economy. Also, our governance principle, Prime Minister's governance principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, actually translated into money reaching to the most needy people and ensuring that they do not suffer the hardships of the COVID period, and they are able to lead a very happy and a healthy life. Second, a digital revolution. I think the whole world is overawed by the success of Indian economic digital revolution. Today, in October 2023, we have touched an all-time high of 11.4 billion UPI transactions, crossing even 10 billion transactions that we got successively for the 3 months. And this resulted in a digital transaction of over 17.16 lakh crore. So this certainly was a contributor. It transformed Indian economy into a cash-based economy, into a digital economy. Clearing the banking mess, because what the UPA left for Narendra Modi ji was a banking sector in complete mess. This government has not only cleaned up the banking sector, it has actually infused dynamism into the sector. Today, the Indian banking sector is
one of the best performing banking sectors anywhere in the world. While many banks, even central banks, have experienced difficulties abroad, Indian economy, Indian banking sector is going through its best periods. Gross NPAs and net NPAs are at their decadal lows, and public sector banks have their resources have now been used for acting as pillars of Jan Kalyan. In fact, public sector banks have recorded profits of over 1 lakh crore in the last financial year, and that money has been plowed into financing the welfare of the poor. Also, we have seen how a transparent regime like the GST, which is a huge contribution of Honorable Prime Minister, GST collections are at their highest levels. 1.72 lakh crore was the GST collection in October 2023. This is the second highest ever. A few months ago, a year ago, 1 lakh crore also was considered to be a very important milestone to be achieved. And today we have crossed 1.73 lakh crore. This clearly shows the buoyancy in the Indian economy. It shows the resurgence in the Indian economy. And anyone who disputes it can only get their validation in these numbers. There is also surge in direct tax income, direct tax revenues. The direct tax revenues are 10.6 lakh crore till 9th November, as against 10.6 lakh crore previous year during the same period, which has registered a near 22% healthy growth. This clearly shows even the net growth in corporate income tax collections shows a 12.5% rise. So there is a resurgence in the Indian economy across all the sectors. The investments, both the private investment and the foreign direct investment, have shown a big improvement. The foreign direct investment during the UPA 10 years, during the UPA 10 years was $304 billion, which has more than doubled to $628 billion so far. This is an increase of more than 100%. So with this kind of a performance, the country is poised to achieve its economic goals and very soon to become third largest economy in the world and going back to achieving India's ancient glory under Prime Minister Narendra Modi ji. Yehi Modi ji ki guarantee hai. Thank you. Thank you very much. Thank you. Next speaker is Dr. Ami Yazni. Ji, Madam. Hearing the Treasury benches speak about the state of the economy, and they speak only from 2014 onwards, I would like to remind them that we have to go back to 1991 when we had the new economic policy. That is the point when the borders for economy were opened for foreign investment to come in the country. When foreign investment policy was taken, at that time, Dr. Manmohan Singh ji was the finance minister. I would just like to point out a few things before I just come to the main 2 points. Structural reforms were ushered in, and the structural reforms take a long time to result. And it took a long time. It takes always, you look at the world economy in any way. So this 1991 was the starting point. So we may have to refer to these points and not just jump to that we have become independent only in 2014. Now, coming to the state of economy today, three main factors, three main areas, which I would like to say in a short time. First is the farmer section, the agriculture sector. Some of the data is not even in the formal economy because they're landless farmers who are working on farms. That productivity is not reflecting in the formal economy. That farmer section or that particular sector is devoid of any reforms today. They are wanting some kind of reforms which is not reflecting in the economy, and we are seeing landless farmers. We are seeing farmers who are wanting some kind of reforms, and they want credit, they want equipments and several other things. The second sector, which is very important and which nobody is talking about, is the MSME sector. The MSME sector has got 630 lakh units
which are micro units. Post COVID, quite a few high number, I do not want to go into the data of 15,000 or 20,000 have closed down. Where is the credit facility? You talk about schemes, but have these schemes percolated to those units? Have those units revived? Have the labor force been able to re-enter these particular units? Whether the technology transfer, and you are continuously talking about comparing with Germany, Europe, UK, US, and you want to take only talk about foreign. Have you tried to look internally, locally? You are giving food ration to more than 50% of the population. 80 crores people are getting free ration. What about employment? Coming to employment later on, back to MSME sector. Where are the credit facilities? Where is the credit which is required to revive a unit and give them life? And this MSME sector is the backbone of the economy. And you're not speaking about this backbone of the economy. You're not speaking of the MSME sector. You're not talking about technology transfer to this particular section. And you're not even having the right data on the MSME, that whether they are surviving, they are going to revive, or they are going to see that the economy gets strengthened. Sir, the third is the gig workers. We have not got a workforce which is regular. They don't even get retirement perks. They don't get any health care because they are gig workers. You talk about these gig workers, they are not regular workers because industry does not employ them. You have graduates who come out of universities because you have got tremendous universities flourishing, private universities, and you have got different economic education policies for these universities. The graduates who come out are unemployed youth. Why are the youngsters of our country going abroad? I do not want to give the numbers that form the diaspora outside, but what about looking internally at our economy? All the data which is coming is foreign direct investment, export, but then you have to look at what has happened to export and import. The export has gone down. You are importing. So where is Make in India? Where is Make in India? And let me tell you, sir, all these schemes which they are naming, they were started by UPA. This National Manufacturing Policy 2011 became Make in India. Now, if you're making in India, where are the products? What are you doing? Why is there so much import of these components? Why are you not manufacturing? Why are you not employing your youth? Why are you not equipping them so that the economy becomes sound? And you go on talking about third largest economy. So let me tell you, sir, that our country became the third largest economy in purchasing power parity in 2011. This indicates that India's overall economic output, adjusted for the relative cost of living, was the third highest in the world. This shows that it implies that a higher standard of living for Indian citizens. Today, we talk about poverty, but we do not have poverty alleviating programs. On the contrary, we are making them handicap by giving rations. We are not equipping them, we are not empowering them to become able-bodied people who can be employed. You are not creating employment opportunities, but you want to talk about schemes that you have renamed. So in the end, I would like to say that you have to look at the global hunger index. Where do we stand? You have to look at malnutrition for children. Our children are being wasted, stunted growth. You have to look at female infanticide. You have to look at mortality for children. What are we doing in the healthcare system? So when you talk about the state of the economy, you don't only have to talk about comparing with other countries, you have to look inward. When you make your economy strong, then you can speak about the state of the economy, and not the ruling dispensation's head or people who are manning certain ministries. It's not their work, it's the work of the scheme. And it was from 1991 onwards that the institutions were put in place. These institutions acted as regulatory mechanisms. Where are those institutions? Why are these institutions not getting accountable for not performing? These are these non-performing assets, apart from the non-performing assets of the bank. We have not been able to bring that money back. Forget about the black money you talked about. Forget about 15 lakhs going to each one's account. We have not been able to say anything about that. The ruling dispensation has got some kind of a fixation. They are living post 2014. They forget their own childhood, that they studied in good educational institutions. They don't give credit to their own parents.
their own grandparents who got freedom to this country and are only having a straight-jacketed formula post-2014. But what have you done after 2014? Where is that education required? Where is the skill which is required to equip our youngsters to see that they become good employers, they can also create employment for other people? Where is that economy's backbone? MSME, where have you done that revival? You talk about portals, digital India, where is that computer education? And what are these portals doing? The data on Udyam portal shows that the industries that closed down, the MSME, there is no detail. The licenses got cancelled. They couldn't revive. And they're all sitting. What about the cooperatives you want to start at the local level, at the village level? They don't get revived. You want to give employment to women. Where are the women getting employment? They have not got a re-entry in the workforce. They cannot get back in the workforce post-COVID. They're sitting at home. So what are you doing for empowerment of women? You may bring the reservation bill with a caveat. But where is the empowerment for women? How will she become economically empowered? You are not giving her health care. You are not giving her meals which are nutritious. So, sir, these are the factors which need a proper data. Where is the data, sir? There is no data. Where are those institutions providing data on all these indicators? These indicators will tell the state of the economy of this country, not who is manning the country or who are manning the institutions. And so one last point, sir. Please that conclude. unless and until we change the game, we cannot succeed by changing the names. You may change the name of all the policies, of all the schemes, but if you cannot perform, you become a non-performing asset. State of the economy, the students, the youngsters of this country are reading, they're watching, they're looking at all the Nehruvian era and the Rajiv Gandhi era for computerization, for all kinds of digital work, which is now happening on that day. Please It was already conclude, Dr. created. Yamni. And that is why the state of the economy is not as the way it is projected Please. by the ruling dispensation. Please. Thank you very much, sir. Thank you. Next speaker is Shri Jose K. Mani ji. 3 minutes. So the economic well-being of our citizen transcends political affiliations. It is a matter of national urgency. The economic indicator unfortunately paint a concerning picture. While the government claims economic growth, the rising unemployment rate tell a different story, impacting the lives of millions. So, to assess whether an economy is growing, to assess economic activity, to find out whether the economy is robust, we need to assess the lower strata of people, which consist of the farmers, laborers, and workers, whether the standard of living has improved. And if you go in the plight of these strata of people, we find that they are struggling for existence, they are struggling for survival, they are struggling to make the ends meet. And not only that, we find that from the data all here, we find that the gap between the haves and have-nots have increased. And about the 40% of national wealth consist of even 1% of the population. That shows that the wealth is being amassed by a smaller portion of the population. So this really shows that the government is pro-corporate, pro-industry. There's nothing wrong in pro-industry, but it should not be at the expense of the farmers, the lower strata of the people. So when you take the agrarian crisis continues to hunt our farmers, suicide and distress in the rural sector persist. According to the National Crime Records Bureau, it states that the report states that 154 people, that is the farmers and
daily wage laborers in India commit suicide. It's a huge number. I think it is the largest in the world. So definitely there's something wrong with the system. We need to find, and really when you go into in deep, we can find that the economy, when the activities are there, it is not translated into the farmers. Please conclude, Joseph. Yeah. Please conclude, Joseph K. Mani, please. Sir, Please. when the live example, I can tell you that the rubber farmers of Kerala, sir, you know the rubber farmers. Please Sir, sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. Sir, 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 it is a strategic product. That's why in 1947 the Rubber Act was enacted and the rubber board, electron rubber board was introduced. But we know that the price of the natural rubber can be improved only at the policy of the central government. If there is no, we find that any states where is no political gain by the BJP, they will not give any development at all. Please. It is discrimination. Please, we Maniji, need please to conclude. see the nation as one. If there is no political gain, no development, if the farmers are not helped. Please. So have a heart, actually help the rubber farmers. It is for the nation's development. Thank you very much. Next speaker is Sri Mahesh Jatmalani ji, please. Not present. Not present. Next speaker is Sri Vaiko ji, MDMK. Mr. Vice Chairman, sir. 3 minutes, Vaiko ji, please. I'm so thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the economic situation in the country. India's current GDP is 3.75 trillion US dollars, which the present BJP government claims it would go to 5 trillion in 2025. But who will be benefited by this growth? It is a jobless growth. Unemployment is increasing. As on October 2023, it is 10.505%. The educated unemployed youth in the country are struggling to get employment opportunities. We are witnessing every year 1 crore job loss in our country, and the wages of the workers are falling drastically. We are witnessing the continuing agrarian crisis. You have promised doubling the farmers' income, but unfortunately, farmers' income did not get doubled, but at the same time, suicides of the farmers got doubled. Our banks are in deep crisis. What is the remedy that they are putting forward? The bank NPAs are rising, and the government is providing further concessions to the corporates to write off their loans, but they are not prepared to reduce or write off the loans of farmers, students, and small entrepreneurs in the MSME sector. This country has also faced inflationary pressures over the years, influencing the current unemployment rate in India. High inflation rates can erode the purchasing power of consumers, leading to reduced demand for goods and services. This can have a cascading effect on business, resulting in cost-cutting measures, including layoffs and hiring and firing jobs, leading to higher unemployment rates. Already there is a decline growth of 4.3% against 15.5% year over year in trade. Transport, hotels, and communications industry. As I said, inflationary pressures lead to price rise in the essential commodities. Raw cotton prices increase in the inputs for agriculture and livestock. Higher GST rate for common items are reducing the purchasing power of the common man. The structure of public sector undertakings in your regime is crumbling. One by one, the public sector unit is sold to the corporate giants. When the crude oil is sold at a lower price in the international market, I am not able to understand why the union government is not reducing petroleum retail price to the common people. The price of LPG has been increased manifold in the last 2 years, and it is now beyond the affordability of the poor people. You have a scheme called Ujwala, but how many people are registered in that scheme? And in that also you have restricted the number of cylinders in the year. So the government should bring down the price of petrol, diesel, and
LPG, keeping the interests of the common man. The spinning industry in Tamil Nadu has been facing unprecedented losses for several months. For the first time in the last 20 years, exports of yarn and textiles have declined by around 28%. A mill having about 10,000 spindles would produce 2,500 kilogram of yarn per day, which is incurring a loss of 1 lakh per day. The structure of state finance is also very much affected. After the introduction of GST, the revenue has come down. There is no proper distribution of GST collections to the states. The states which are supporting the ruling party at the center are given a favorable position as compared to the states which are ruled by the opposition parties. Our state, Tamil Nadu, is not getting its rightful due from the, 1 minute, sir, from the GST collections despite demands from the state government. The recent Vigyam cyclone has created havoc on the coastal districts of Tamil Nadu, apart from Andhra Pradesh. Our fishermen have lost their livelihood for the last 6 days. Their boats and nets have been washed away. The farmers have lost their standing crops due to waterlogging. The city of Chennai, the whole city was submerged due to unprecedented heavy rains for the last 2 days. Though the state government is doing its best by providing shelter and food at the community centers for the people living in the low-lying areas, it is the due fury of mutual nature, which is a big challenge. The union government should rescue and relief materials and financial assistance to the state without delay. Very important point. धन्यवाद। माननीय श्री समीर उरांव जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदया। आपने आज के भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित विषय पर सदन में चर्चा करने के लिए भाग लेने का अवसर आपने दिया है। उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विभिन्न निर्णय के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे आगे बढ़ाया है और बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है। उपसभापति महोदया, आज विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समूचे विश्व में पिछले कुछ वर्षों में रूस, यूक्रेन युद्ध, इजराइल, हमास युद्ध, कोरोना महामारी जैसे अनेकों संकट का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद इन सारे समस्याओं के कारण विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच एवं आर्थिक अनुशासन के कारण इन अनेकों संकटों का सामना करने के पश्चात भी भारत की अर्थव्यवस्थाएं स्थिरता के साथ समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। उपसभापति महोदया, आज सरकार की मजबूत आयात निर्यात नीतियों के कारण देश में विदेशी मुद्रा का भंडार अपने देश के अंदर उच्च स्तर पर हो रहा है। सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन इस देश के अंदर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सरकार द्वारा ऐसे देश के अंदर जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण करके असहाय लोगों को, विकलांग लोगों को और वृद्ध लोगों को पेंशन योजनाओं के माध्यम से ये लाभ प्रदान करने का भी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर इन सामाजिक योजनाओं पर खर्च के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था लगभग सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। उपसभापति महोदया, सरकार द्वारा एक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने के पश्चात व्यापारियों को टैक्स के नियमों में से सरलता मिली है
इसके परिणाम स्वरूप इस वित्तीय वर्ष में सरकार को ऐतिहासिक रूप से अब तक के सबसे बड़े जीएसटी संग्रह प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे संस्थाओं द्वारा आगे के वर्षों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक देखा जा रहा है। उपसभापति महोदया, इसी के कारण आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। विश्व के अनेक देशों की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक विदेशी निवेश की यदि किसी देश को प्राप्त हुआ है तो वह भारत है। उपसभापति महोदया, पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के सूत्रों के आधार पर हमारे स्थानीय उत्पादकता को किस प्रकार से यहाँ के युवकों के माध्यम से जो आगे बढ़ाया है, जैसे जो है हम जनजाति क्षेत्र से आते हैं, झारखंड से आते हैं, झारखंड में वन क्षेत्र है, वहाँ जो है वनोत्पाद है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वहाँ किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति कार्य मंत्रालय में जो है ट्राइफेड का वंधन विकास केंद्र के माध्यम से वहाँ के जनजाति क्षेत्रों में हमारे माताएं युवकों ने जिस प्रकार से ऐसे वन उपज को कलेक्शन करके उसको प्रोसेसिंग करके उसको विपणन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से यहाँ की उत्पादकता, जो पौष्टिकता और यहाँ के जो खाद्यान्न पदार्थों में जो ह्यूमिनिटी पावर था, उसको दुनिया के देशों में वो मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में पहुंचाने का काम किया और वहां उनकी उत्पादकता बढ़ने के साथ आमदनी बढ़ रहा है। आज हम गांव में 10 साल पहले जाता थे तो हम उस समय कुछ नहीं देखते थे। आज जब 10 साल के बाद मैं जाता हूं इन 9 वर्षों के अंदर में, तो मैं पूछता हूं कि भाई ये क्या है, तो नहीं, हम लोग एक मिनी राइस मिल बैठा है यहाँ पे, सारे लोग हम लोग मिल करके आसपास के जो भी धान का उपज होता है उसको हम यहाँ चावल बनाते हैं, इससे हमारी आमदनी बढ़ रही है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था में एक गांव भी सहभागिता हो करके ये भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहभागी हो रहे हैं। इसलिए उपसभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2014 में जब हमारे माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत की डीजीपी 112 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। 2025 तक सरकार ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की आर्थिक उपलब्धियां का लाभ देश की आम जनता को भी हुआ है। 2014 में देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 17,000 रुपये थी। पिछले 9 वर्षों में सरकार की नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके मेहनत के कारण आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,75,000 हो गई है। उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में देश के एक्सपोर्ट लगभग दुगुना हो गया है। सरकार निरंतर देश की आर्थिक